You have entered the Chronics rabbit hole, and welcome back to the channel. If you were there for my video of the Song of Yaara, thank you so much for coming to this video as well. And if you're here just because you're checking out the magical journey, thank you so much for being here as well. I love the song, so it would be wise for you to check it if you have not seen it yet. But if you're here to continue the journey, let's just get right into it, because I need to know everything about these gentlemen and the behind the scenes. Just remember, before starting this, you are the best, not me. You are the best. Thank you so much for being here. I hope you have found your heart and your feet, and you want to continue your journey, even though sometimes your inner self can get clouded. I hope that is passing for everyone if you have been going through that. If not, we are here with the magical journey of Yaara anyways, and we're very excited to go behind the scenes to see all the amazing stuff that happens on this Coke studio, which we love, and here it is right now. Got the subtitles on. So thankful for that. I think अगर हम लास्ट कोई 2-3 साल की बात करें, उसमें अगर कोई कुछ स्टैंड आउट आर्टिस्ट्स की बात करें ना, तो अब्दुल हनान has been one of them. Oh wow. One of these days, he just sent me a voice note. कोई 1 मिनट का था. ना बताऊं इन सवालों कब से The moment I heard it ना, पता नहीं मेरे दिल को तो ऐसे वो करके लगा कि even though it's coming from the younger generation, but I felt he's also saying what I in a way want to say as well. What is your story, Anna? The story goes back to बचपन वाला पॉइंट. जिस तरह सब म्यूजिशियंस का होता है, सारे यही बात करते हैं कि मुझे शुरू से शौक था, वही मेरा भी यही सीन है. मुझे याद है, मुझे इतना अच्छा गाना आता नहीं था, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता था. एक दो कवर्स भी किए बड़े हॉरिबल किस्म के शुरू में. इसी तरह कुछ ना कुछ करता रहा बस, कि वही ज़िंदगी में अगर कोई भी गम है, कुछ भी है, पीछे एंड पे ये चीज़ है. ये मेरी लाइफ का एक सेफ्टी नेट है. कोई आतिफ असलम की एल्बम आई है, वो सुन के कान इमेजिन करना है कि जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. बहुत फार फेच्ड लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक वो थी फीलिंग कि शायद मे बी ये हो सकता है. सही था. Wow, humble, very humble person. ये मेरा पहला गाना था, और मुझे ये था कि शायद क्या कौन ही सुन लेगा, मतलब मुझे कौन जानता है. Who even knows me at this point? एक ऐसी वायरलिटी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो गया. Wow. हल्के फुल्के गिग्स आना शुरू हो गए थे. अकूस्टिक गिटार मैंने पकड़ा है, और मैंने कुछ लाइंस जब शुरू की हैं, Struck a chord, buddy. पीछे से आगे तक गूंज आई आवाज़ों की मुझे, और सब गा रहे थे. Wow. तो मैं तो बीच में रुक ही गया. मैंने कहा यार आप लोग ही गा लो. No, that's some real rain. Nice tuner on the phone. इन सवालों में कब से यूं फंसा हूँ, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ. जुल्फी भाई मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. थोड़ा सा मुझे हुआ कि क्या ही बात हो सकती है. जब तक कुछ हो नहीं जाता ना, मैं बहुत उस तरह का हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं कहता हूँ बस मेरी सिलेक्शन हो गई है. वो वाला सीन के नहीं अभी नहीं. I feel he's very true to his Wow. You have to think
the honor to be on this, it's uncountable, really. It really is. The ripple effect from being on Coke Studio, especially in my opinion, Pakistan, if it was the first one that started it, there's this magic behind it that's going to push you to the stratosphere where you already are a star, like Abdul Hanan. But this is going to make it even different. And like he says, like, I actually got picked, and not thinking something's going to happen until it actually happens. To have that bit of skepticism and pessimism in your life is part of the questions he has, because he doesn't feel like he's able to put the walls fully down and accept people fully, maybe. And this is just so cool. And you can see Yulfi, how much he loves it, and he's just like belting it, leaning back. And I just love how he said this is someone to look out for, and he stands out, which I didn't think he would really say that. And the fact that he is, bravo on that. His own self, और एक पाकिस्तानियत है उसकी मेलोडी में, जो कि आपको आपका 90s का भी म्यूजिक, और उसकी मेलोडी में, उसकी राइटिंग में वो एक पॉइंट है, ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया एग्जिस्ट करता है. Nostalgia and perfection. So generally I am an overthinker, और हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट चल रही होती है दिमाग में. तो शुरू ही गाना बेसिकली यहाँ से होता है कि इन सवालों में कब से फंसा हूँ मैं. आपके लिए कभी कभी वो सफोकेटिंग हो जाता है. कैमरा प्रेशर तो नहीं था, बट मुझे ये समझ आ गई कि इस बात का कोई रिस्पॉन्स भी होना चाहिए. तो बताओ तुम्हारे दिमाग में भी क्या है. मैं भी सोच रहा हूँ. फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की, और एकदम से ही स्माइल्ड. कहते एक मेरे जहन में नाम आ रहा है. मैंने कहा कौन? कहते जाफर काविश. Jafar and Maz, and इनके बैंड का नाम है काविश, like everyone knows it. जाफर और मैं हमेशा से सेम स्कूल में थे. मुझे याद है उसी साल बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे, और उसी साल हमने अपनी म्यूजिक जर्नी भी इन अ वे स्टार्ट कर ही दी थी. हम दोनों का बैलेंस बड़ा अच्छा है. We've known each other for almost 25 years now. आप जब किसी को इतना अरसा जानते हैं तो फिर you know the person even before the person says anything. आपको पता है वो फील क्या कर रहा है. That's so cool. Their unit, that is so awesome. For a singer to have a guitarist do that, and vice versa. maybe if the break is ये वाला पार्ट, मुझे था, अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ ब्रेक होनी चाहिए. Yeah, that's vocals. यहाँ से अगर हम ग्रूव वापस लें the same way, maybe totally doesn't kill the moment also, और बिल्कुल ही abruptly शुरू भी नहीं हो जाता. कर भी सकते हैं. सही है. Just to hear it out कि क्या feeling आती है. Not had any kind of formal training of singing कभी भी. अम्मी से मैंने कभी सीखा नहीं है, बट क्योंकि उनको देखा बहुत था तो उनसे ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशंस बहुत रही, सारी चीज़ के ऊपर बात बहुत होती थी. I just have to say that is so impressive. I think both of these guys, Abdul and Yavin, are both trained themselves. That's just impressive, and that's sometimes when you get the most unique moments, because if you're getting taught a specific way, you're going to get a lot of the same flavor. But if you really teach yourself, you get a different variety and spice to what you put out, because you're not necessarily playing by the rules. And that's what I kind of feel from the freedom of both of these singers. थ्रू एंड थ्रू हर लम्हे में ही उनकी इन्वॉल्वमेंट है. जो भी हम हैं इस वक्त, like I think it is because of her, because we saw her and we learned from her, adapted her ways. I miss that. It's not the mom, please let me know. सिर्फ एक डीबी भी हो जाना बहुत है. सांस लेना सजा कि जैसे सांस लेना ही नहीं आ रहा ना, मतलब
उस टाइप की सिचुएशन नहीं होती, you just need that emotion. अगर तो you think you can now go into that, क्योंकि वो इतना पक्का हो गया करना बहुत चले जो है वो भी खराब बिल्कुल ही नहीं The first step in the song was this jam session where everybody just kind of played live. So when you do Definitely get had a jam these live session recordings vibe. and you get to play with that, it's like a whole new super exciting feeling. I'm somebody who has always made music that's kind of more electronically leaning, but with this one I really got to kind of experiment with this more kind of organic sound palette. You got that right. There's so much relatability in how stripped back and just sort of intimate it is. Well said. It's going to be a lot of It is. people's 3 a.m. headphones in dark room kind of listening. Like it's one of those songs. जब लिरिक्स The मैंने next सुने hour after 2 it was a.m. somehow a reminder of that time जो मैं खुद गुजार के आ चुका हूँ कि जिसमें यार आपको समझ नहीं आ रहा, you're confused, you're looking for answers and you can't find them. Things don't change. जिंदगी की ऊंच नीच नहीं बदलती, वो ख़त्म नहीं हो जाती. Yeah, ups and downs keep The bottom line भी इस गाने के लिए हमारी यही थी कि बिल्कुल किसी को ये नहीं बताना कि सब ठीक हो जाएगा. So he's not saying कि कोई ऐसा resolve है जिसमें सब ठीक हो जाएगा. He's not saying that. It's rough because in the West, a lot of people say, "Oh, it's gonna be okay. Everything will be fine," and that only can take you so far. Because if you look at Sleeping Beauty, what that actually is about is they don't want to bring any bad stuff into their daughter's life, and then finally when Maleficent comes, because she's not invited to a party, and eventually evil's gonna come regardless if you don't want it to come or not. When it does come, it will put you to sleep because you'll be frozen by the fear instead of putting it behind you and making it advance you. So I just love that this song is attacking all of these tough subjects for people, and that this culture embraces the darker side of reality, because you have to if you want to be able to go through the ups and downs, because you want to still be able to go on those ups. You have to be able to get through the downs to get to the ups, right? That he's saying तू संभल जाएगा. So it's up to us. Yeah. How we absorb it, how we accept it, maybe how we surrender to it sometimes, and how we embrace it. तो उसी में ये वाले लिरिक्स, बट वो किस तरह आए मैं भी नहीं जानता. वो बस बैठे बैठे एक ही दिन में आई थिंक होना होता तो ऐसे होता है. इस गाने को किधर लेके जाना था टुवर्ड्स द एंड, वो एक डिस्कशन हमारा तकरीबन 2 महीने से चल रहा है. वी जस्ट कुडंट कंक्लूड इट. तो बिकॉज उसने नहीं होना था तो वो बात कहीं नहीं गई. और जब एक चीज़ होनी थी इट जस्ट टुक अ कपल ऑफ आवर्स. तो मेलोडी मैंने अगले दिन ही जाकर फिर जुल्फी भाई को सुनाई एंड ही रियली लाइक्ड इट. It looked effortless, bro. Jafar is, again, somebody who he opens his mouth and it kind of instantly always hits you. Like there's no way to not resonate with it. Well said again. ये गाना पुराने जोन में जाता है, जो पुराना जिस तरह का म्यूज़िक पाकिस्तान में आता था, जिसमें इट वाज काफ़ी रॉ, लेस इलेक्ट्रॉनिक. गाने से बढ़ के फिर आपके लिए एक जर्नी बन जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल. और लोगों के लिए भी वही बाय द वे मैटर करता है. उनको भी लग रहा होता है गाना सुन रहे हैं लेकिन वो जर्नी सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अच्छी बात है. यू लुक एट इट लाइक दिस. बहुत Oh man, I feel such a kindred spirit with Abdul. एज एन आर्टिस्ट, मतलब इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जो होता है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आर्ट के थ्रू, और वही कोशिश की है मैंने. एक इंट्रोवर्ट इंसान एक पब्लिक प्लेस में कैसा फील करता है, उसको एक स्पेस चाहिए कि वो कहीं जाए, कहीं बैठे, अपने आप से बातें कर सके. और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे 2 वेज हैं. तो वो देखता है कि एक तरफ बहुत हैपनिंग्स हैं और एक तरफ देखता है कि बड़ा सुकून है. He selects his own path जो आइसोलेशन वाली है, so that he can sort his thoughts. हम सबको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर अपने दिल को फॉलो करें, विद टाइम हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे.
तो ये इस चीज़ को रखते हुए हम लोगों ने इस पूरी वर्ल्ड को डिज़ाइन किया था। तो फैंटेसी काइंड ऑफ अ वर्ल्ड जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी एक चीज़ ये भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान में एक आर्ट स्ट्रीट हो तो वो किस तरह की लग सकती है। पाकिस्तान है जो बड़ा एक्सप्रेसिव सा है, बड़ा आर्टिस्टिक सा है, वो चीज़ें अपनी कल्चरल चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें थ्रू आउट। हम लोग अभी अभी पहली बार सेट पे आए हैं। इतना डिटेल्ड सेट एटलीस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द सॉन्ग अ लॉट। बिल्कुल सेट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, व्हिच इज़ क्वाइट अमेजिंग। कहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई है, यू नो, शेयरिंग all of this with such amazing musicians, legends. Yeah, shout out to the musicians. So cool. I love those laughs. मैंने ऐसा देखा नहीं इंस्ट्रूमेंट कभी यार। तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है। हन्नान से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और अगर ये लोग मुझे इस गाने में नहीं रखते तो मैंने लटक जाना था कपड़ों पे कि भाई मुझे बजाना है इस गाने में। Let me play on this. Here we go. Outfit time. Makeup. We're giving him very casual look and actually दोनों की semi formal look है। इनकी जैकेट है, उनका ब्लेजर है, वेरी अर्दी टोन्स। इनकी हाँ ज़्यादा बॉयश है, इनकी ज़्यादा मैनली। Nice drummer. Here we go. Gumby. Wow. Shout out to Gumby. I keep missing those when they pop up. I'm glad I found It's an opportunity to make love the language, make art the language, और उसके थ्रू हम मिल के ना we can bring a change. That change वो जो kindness ले आए, वो change जो नफरत ख़त्म कर दे, वो वाला change। और वो ऐसे ही होना है, art के थ्रू होना है, प्यार के थ्रू। Art and love. See, that's a great message and a great adventure. जो हमारा प्रेजेंट म्यूजिक सीन है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन नहीं हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़िंदगी की थोड़ी सी मार भी जब पड़ती है ना, तो उसके बाद यू रियलाइज दैट जिस चीज़ ने जब होना है और जैसे होना है उसने वैसे ही होना है। जो यहाँ तक लेके आया है आगे भी चीज़ें वो करा देगा खुद ही। मैंने अपने आप में जो वो एक था ना, ओवर थिंक करके अपने आप को सेल्फ डाउट, उस सेल्फ डाउट से मैंने अपने आप को बहुत हद तक निकाल दिया है। मुझे लगता है कि ये गाना मेरे लिए सिर्फ गाना नहीं है, ये मेरे लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, और मैं वो सोचता हूँ ना कि वो बचपन में जब मैं वो इमेजिन करता था तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मैनिफेस्टेशन का वाकई काफ़ी रोल है, और वो जब आपके अंदर वो इनग्रेन्ड होता है तो आई थिंक वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं लाइफ में। गाने का नैरेटिव ही ऐसे बना कि वो एट द एंड एक थेरेपी सी है जो मैं भी फील करता हूँ। एंड आई होप एंड आई फील कि ये सारे फील कर लें, तो सबको ना सुकून मिल जाएगा, सब कुछ ज़रूर संभल जाएंगे। Oh, thank you all for being here with me on this one again. Oh, the thing about when you become an introvert and you start thinking about all the problems that you want to try to fix, it can become suffocating because there's so many problems that present themselves if you're aware. And that's just such a hard lifestyle to have if you're not feeling good yourself, and it becomes self-doubt. And that's what they were expressing in this, and that's something I've been struggling a lot, especially when you become a reaction channel. It's so much introspection that you're doing in front of people that when you're used to doing this introspective thoughts in your brain, it's, you know, safer and all that. Like the guy said, there's those two paths. One
extroverts are going to go to the party, where the introverts going to go on that peaceful walk to think and recalibrate, as I always say. But the beauty of this is you can still be an introvert and get all your thoughts out in the correct way, in a party way, with music, because that's what brings everyone together. Because without the music, a lot of the times I wouldn't even go out. It's mainly a concert. You'll see me be around that many people, like 100 people or more. You have to see me at a concert for that to be able to happen. Or a grocery store, food something based, or amusement park. So that's where I'm comfortable, right? And this type of music, though, it's so encouraging and transforming, because what's also crazy is literally when I started this channel 2 years ago, I had a dream to start talking to the people that I was listening to, the music that I loved. Now that this is happening, I literally have a podcast on this channel where I'm talking to people called Storytime with ETC. And now that that's happening, I have so much self-doubt still before the interview. And I'm studying so hard to make sure it goes well because of the self-doubt and all the introspection of hopefully this goes well. And I want to just make sure they have a good time as well when they come on. So, but now that that's happening and it's going well, I would say, sometimes it's hard to understand and realize when it's already going down, because you're so introspective and you're just trying to fix and do something else instead of just appreciating the moment and smelling the flower, like the lady hands at the beginning of the song. That's just such a powerful thing, and that's like a rule to life, is smell the flowers and pet a cat, and make sure you take those moments when they present themselves. And I just love it. I love these magical journeys. This song was incredible, Yaara. Please let me know what that actually means. I feel like every single song and behind the scenes, you get to understand the culture even more and more. And again, I would love to come to Pakistan with my family as well. I have a lovely family that would love to meet all of this welcoming. It's such a good, it's just good for any family, really. And thank you all so much for being here. If you saw the song and the magical journey, thanks as well, because that means a lot to me that you're spending that much time getting to know me. If you want to see me continue with the Coke Studio, please let me know by hitting a like and putting in the comments below which way I should move forward. I'm sure there's more coming out for the season. I don't know how many songs per season come out, but if this season ends, we're going to go back to the previous one so I can catch up, because there's a lot of catching up to do. Thank you so much. We are now exiting the rabbit hole, folks. Peace and love. God bless y'all. You are now exiting Enter the Chronic's rabbit hole. Thanks for your participation. Make sure to follow, subscribe, and put on notifications. We will see you all next time. Stay tuned, tell your friends about us, and God bless. Hey guys, thank you so much for making it this far in the video. If you like this channel, remember to subscribe right here. And if you want to subscribe to the artist that you just heard, remember, it is right here. And if you're excited to see another video that we think you might like, click here. Thank you so much, Chronicans, for making it this far. We love you so much.